Hello everyone and welcome back to my playlist of abdomen, pelvis and perineum which we are studying from BD Volume 2 और आज स्टार्ट करने लगा हूँ चैप्टर नंबर 33 और जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में दैट इज़ द एनाटॉमी ऑफ रेक्टम। इस चैप्टर में दो टॉपिक्स हैं, रेक्टम की एनाटॉमी एंड एनल कैनाल, दोनों पे अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू फोकस ऑन एनाटॉमी ऑफ रेक्टम। ओके, नाउ introductory lines. The lowest part of the gastrointestinal tract is formed by rectum and anal canal. So this is the downward side of the GI tract. हमने GI tract जो कि oral cavity से start होता है उसके different parts पढ़े हैं, esophagus, stomach, small intestine, large intestine में ascending colon, transverse and descending colon. So the last bit of this tube is the rectum and anal canal, जिसकी बहुत clinical relevance है, इसीलिए इस पे पूरा अलग से chapter है। Okay, useful components of food are absorbed and waste material is expelled from the anus. Obviously digestive system का पूरा design ही इस तरह से है कि when you eat food everything is digested and the useful bits are absorbed and the waste is excreted out. तो जो opening जिससे waste product निकलता है that is known as the anus. Okay, this is the external opening of the anal canal. And through this opening all the waste product, the potty that comes out of the body. Okay, now anal canal is heavily guarded by sphincters muscles and is subjected to many maladies. बहुत सारे diseases इस area से associated हैं and they are rather more dependent upon what type of food is being consumed. Okay, so let's start studies about rectum. The rectum is the distal part of the large gut and it is placed between sigmoid colon above and anal canal below. Distension of the rectum causes the desire to defecate. Now usually इस तरह से होता है कि जो rectum है ये usually empty होता है. So here for example in this diagram we are looking at the rectum here and this is the anal canal. So इससे ऊपर obviously there will be sigmoid colon और उससे ऊपर फिर different parts of descending colon, transverse colon. So colon में waste product सारा मौजूद होता है और जैसे ही वो रेक्टम में आता है सो रेक्टम बेसिकली डिस्टेंड्स, इसका साइज बढ़ जाता है बिकॉज इसमें वेस्ट प्रोडक्ट एंटर होता है एंड दिस डिस्टेंशन एक्चुअली इज फेल्ट एज द डिजायर टू डिफिकेट, यानी पॉटी करने की जो डिजायर है, जो फीलिंग है, जो सेंसेशन है वो उस वक्त होती है जब रेक्टम में वेस्ट प्रोडक्ट या फीकल मटीरियल फीसिस एंटर होता है। ओके, नाउ रेक्टम इन मैन इज नॉट straight as the name implies. Word rectum का मतलब भी होता है straight. Rectus abdominis muscle, याद है ना, straight muscle. In fact it is curved in an anterior-posterior direction and also from side to side. ये जो curvatures हैं rectum के अभी थोड़ी देर में हम पढ़ते हैं. The three cardinal features of large intestine which are sacculations, appendices, epiploidy and tinea, they are absent in the rectum. ये हमने तीनों टर्मिनोलॉजीज जब लार्ज इंटेस्टाइन के वीडियोस डिस्कस कर रहे थे तब हमने ये तीनों टर्म समझी थी कि व्हाट आर अपेंडिसेस, एपिप्लॉइडी, व्हाट आर टीनिया, जो लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर होती है लार्ज इंटेस्टाइन में उसकी वजह से जो मार्क्स बनते हैं और सैकुलेशंस बनती हैं ये सब रेक्टम में नहीं होते। सो रेक्टम की वॉल हैज़ अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक देन द रेस्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, नाउ रेक्टम इज सिचुएटेड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेसर पेल्विस in front of the three pieces of the sacrum and coccyx. Now this is a good diagram to visualize what is the position of rectum. So if we focus on this diagram here, these are sacral vertebrae and coccyx, उसके सामने बिल्कुल है ये rectum. So rectum is situated in the posterior part. This is the lesser sac और ये उसका posterior part है और बिल्कुल vertebrae, sacral vertebrae और coccyx के सामने है rectum. Okay, extent. It begins as a continuation of the sigmoid colon at the level of the third sacral vertebrae. Now this is the third sacral vertebrae. इसके ऊपर जो है वो sigmoid colon होगा और third sacral vertebrae से आप देख रहे हैं कि start हो जाता है rectum. Now the rectosigmoid junction is indicated by lower end of the sigmoid mesocolon. The rectum ends by becoming continuous with the anal canal at the anorectal junction. The junction lies 2 to 3 centimeter in front of and little below the tip of the coccyx. In males, the junction corresponds to the apex of the prostrate. So let us visualize all what is written here in this diagram. अब बात ये है कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो रेक्टम है ये ऊपर कंटिन्यू होता है किस चीज़ के साथ, सिग्मॉइड कॉलोन के साथ. सो यहाँ पर ये सिग्मॉइड कॉलोन है और ये रेक्टम है. तो ये जो जंक्शन है ना, दिस जंक्शन इज नोन एज रेक्टो सिग्मॉइड जंक्शन एंड दिस शुड मेक सेंस टू यू बिकॉज ये रेक्टम है तो रेक्टो
ये सिग्मॉइड कॉलोन है तो सिग्मॉइड, रेक्टो सिग्मॉइड जंक्शन। और इसी तरह इंफीरियरली अगर हम बात करें तो रेक्टम कंटिन्यू होता है एनल केनाल के साथ। तो यहां पर जो जंक्शन बनता है इसे हम नाम देते हैं एनो रेक्टल जंक्शन, यानी एनस है और रेक्टम है तो इनके बीच में जंक्शन बनेगा। सो रेक्टम का सुपीरियर जो जंक्शन है वो रेक्टो सिग्मॉइड जंक्शन कहलाता है और रेक्टम का इंफीरियर जो जंक्शन है वो एनो रेक्टल जंक्शन कहलाता है। ओके, और ये वर्टिब्री के लेवल्स आपको अच्छी तरह से पते होने चाहिए ताकि आपको मालूम हो कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है क्या रेक्टम की। सो दिस शुड बी क्लियर एंड देन लेट अस मूव टू द डायमेंशंस। द लेंथ ऑफ द रेक्टम इज रफली अराउंड 12 सेंटीमीटर। ये जो पूरी लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज अराउंड 12 सेंटीमीटर्स इन लेंथ। ओके, इन द अपर पार्ट it has the same diameter as that of the sigmoid colon, but in the lower part it is dilated to form the rectal ampulla. So initially size थोड़ा सा कम होता है, same as the sigmoid colon, नीचे ये rectal ampulla बनाता है, size expand हो जाता है। Course and direction of the rectum. In its course, the rectum runs first downwards and backwards, downwards and backwards, then downwards and finally downwards and forwards. So if you look at this particular diagram, for example, this is telling you that rectum is not a straight structure, it is a curvy structure. So it is curving here and there, और ये जो curves हैं अभी थोड़ी देर में further आपको clear हो जाएंगे। फिल वक्त सिर्फ इतना कि there are two antero-posterior curves in the rectum, यानी एंटीरो पोस्टीरियर प्लेन में अगर देखें तो देयर आर टू कर्व्स एंड देन देयर आर 3 लेटरल कर्व्स। ओके, जो एंटीरो पोस्टीरियर कर्व्स हैं, द सैक्रल फ्लेक्सर ऑफ द रेक्टम फॉलोज द कॉन्कैविटी ऑफ द सैक्रम। सो अगर हम इस डायग्राम पे दोबारा आ जाते हैं, जो सैक्रम है, सैक्रम की ये देखें कॉन्कैविटी है, देयर इज अ कॉन्कैविटी ऑफ द सैक्रम टुवर्ड्स द साइड ऑफ द लेसर पेल्विस। ये जो कॉन्कैविटी है ये रेक्टम इसी कॉन्कैविटी को फिल करता है। सो इसे हम कहते हैं सैक्रल फ्लेक्सर। Okay, it follows the concavity of the rectum. Then there is a perineal flexure of the rectum which is backward bend at the anorectal junction. तो ये concavity को fill कर रहा है part, तो ये पहला इसका एंटीरो पोस्टीरियर जो कर्वेचर है, और फिर ये शार्पली पीछे बेंड कर रहा है। ये देखें, इट इज बेंडिंग इनल केनाल पे जब ये आ रहा है तो इट इज बेंडिंग बैकवर्ड्स। ये फिर दूसरा एंटीरो पोस्टीरियर कर्व है। सो देयर इज अ पेरिनियल फ्लेक्सर। तो इन कर्व्स को दो नाम देते हैं, दिस वन इज कॉल्ड द सैक्रल फ्लेक्सर एंड दिस वन हियर इज कॉल्ड द पेरिनियल फ्लेक्सर। तो ये एंटीरो पोस्टीरियर फ्लेक्सर्स हैं। फिर देयर आर या कर्व्स हैं, एंटीरो-पोस्टीरियर कर्व्स। देन देयर आर 3 लेटरल कर्व्स। द अपर लेटरल कर्व ऑफ द रेक्टम इज कॉन्वेक्स टू द राइट। तो अगर आप ये डायग्राम देखें, नाउ दिस इज द राइट साइड ऑफ द पर्सन एंड दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द पर्सन। ठीक है, अगर हम इस डायग्राम को देख रहे थे तो दिस वॉज द एंटीरियर साइड एंड दिस वॉज द पोस्टीरियर साइड, और यहाँ पे कहीं पे सैक्रम होगी। सो दिस इज द सैक्रल फ्लेक्सर एंड दिस इज देन द पेरिनियल फ्लेक्सर। ये दोनों हमने भी ऊपर डायग्राम में समझ लिए थे। अब हम बात कर रहे हैं साइड टू साइड कर्व्स की। तो साइड टू साइड कर्व्स के लिए, इफ दिस इज द राइट साइड ऑफ द पर्सन एंड दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द पर्सन, तो पहला जो कर्व है रेक्टम का, दैट इज कॉन्वेक्स ऑन द राइट साइड. So that's the first curve number 1. The first is the upper lateral curve of the rectum, convex to the right. The second is called the middle lateral curve. It is convex to the left. So you see here, this is convex to the left side, and then the lower lateral curve is again convex to the right side. So ये तीन curves हैं. Curve number 1, curve number 2, and curve number 3. So remember, rectum is not a straight structure. It has 2 anterior-posterior curves and 3 lateral curves. Okay, these are explained very nicely diagrammatically here. Now relationships. There are peritoneal relations and there are visceral relations. Now peritoneal relations of the upper 1/3 of the rectum is covered with the peritoneum in front on the sides as well. So upper part जो है rectum का, this is actually about 1/3, roughly about 1/3 of the rectum in the upper portion is covered with peritoneum on the front as well as on the sides. The middle 1/3 is covered only in the front, and the lower 1/3, which is dilated to form the ampulla, is devoid of peritoneum. So it is not covered with any peritoneum and lies below the rectovesical pouch in males and below the rectouterine pouch in females.
The distance between the anus and the floor of the pouch is roughly इतना in males and इतना in females. Now, this is an important concept to grasp. So if you look at this diagram, that is the side view of the rectum. यहाँ पे obviously sacral vertebrae होंगी and then coccyx होगा. और ये आप देख रहे हैं कि there is a sacral flexure and then a perineal flexure. So this is the upper third of the rectum, this is the middle third of the rectum, and this is the lower third of the rectum. Upper third में अगर देखें, so there is peritoneum in the front as well as on the side. लेकिन अगर middle third में देखें, so there is perineum only in the front but not in the side. Okay, and the lower third there is no peritoneum at all. So this is a good diagram. और अगर sections बना के देखें यहाँ से और यहाँ से, so this section is representing the upper third, जिसके front पर भी peritoneum है और side पर भी peritoneum है. This is the middle third, जिसके सिर्फ front पर peritoneum है, side पर नहीं है. And this is the lower third of the rectum, जिसपे peritoneum है ही नहीं, जिक्र ही नहीं है. Okay? So these are the peritoneal relations. Now let's talk about what are the visceral relations in rectum. Anteriorly in males क्या क्या structures हैं? Upper two-third of the rectum are related to rectovesical pouch with coils of intestine and sigmoid colon. यहाँ पर एक diagram थी. This one for example, this is the anterior relation of the upper third, जिसमें rectovesical pouch है. यहाँ पे intestine के loops भी होंगे. Okay, so that is the anterior relation, rectovesical pouch. Now lower third of the rectum is related to the base of the urinary bladder and terminal parts of ureters, seminal vesicles, prostrate and deferens duct. So this is the upper part, this is the lower part. Lower part के जो anterior relations हैं उसमें obviously prostrate है, base of the bladder है, upper part में rectovesical pouch है. Okay, so easy to understand with the diagram. Females में anteriorly क्या है? The upper two-third of the rectum are related to the recto-uterine pouch instead of rectovesical pouch, and the lower third, यहाँ पे ज़रा prostate नहीं होगा. The lower third is in relation with the vagina. Okay, ये तो थे एंटीरियर रिलेशन. मेल्स में अलग स्ट्रक्चर्स होंगे और फीमेल्स में अलग स्ट्रक्चर्स होंगे. पोस्टीरियरली जो रिलेशनशिप है रेक्टम का, इट इज सेम इन मेल एंड फीमेल, बिकॉज मेल और फीमेल के जेनाइटल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग हैं, बट दोज आर एंटीरियर रिलेशन. पोस्टीरियर रिलेशंस आर द सेम मेल और फीमेल में. नाउ लोअर थ्री पीसेस ऑफ द सैक्रम एंड कॉक्सिक्स एंड एनोकॉक्सिजल लिगामेंट, दे आर इन द पोस्टीरियर रिलेशन. ऑब्वियसली ये डायग्राम हम देख रहे हैं बार बार. सो दिस डायग्राम टेल्स यू वेरी क्लियरली कि पोस्टीरियर, दिस इज द posterior side, right? This is the anterior side, है ना? So posterior relation में these are the vertebral pieces which are directly in the posterior relation. Then there is muscle which is piriformis, median sacral and superior rectal and lower sacral vessels, and sympathetic chain and some nervous components. Okay, so then it comes to discussing mucosal folds. अब जो रेक्टम है उसकी इंटरनल जो लाइनिंग है, देयर आर म्यूकोजा ऑब्वियसली. सो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एन एम्प्टी रेक्टम शोज टू टाइप्स ऑफ फोल्ड्स. देयर आर लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स एंड देयर आर ट्रांसवर्स फोल्ड्स. जो लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स हैं, दे आर ट्रांजिटरी, which means that they are present in the lower part of an empty rectum and they are obliterated by distension. यानी कि जो longitudinal folds हैं, they are temporary. जब rectum खाली होता है तो ये होते हैं, और जब rectum distend कर जाता है तो ये folds भी गायब हो जाते हैं. बट जो transverse folds हैं, जिनको हम horizontal folds भी कहते हैं या Hausen valves भी कहते हैं या plica transversales भी कहते हैं, बहुत सारे different नाम हैं इन transverse folds के. They are most marked when the rectum is distended actually. Okay, first transverse fold lies near the upper end of the rectum and projects from left wall situated 7.5 cm from the anus. Sometimes it may encircle the partially constrict the lumen, इतना बड़ा भी होता है. The second transverse fold, the largest and the most constant, lies at the upper end of the rectum, the upper end of the rectal ampulla, and projects from the anterior and right walls. This is from the right wall. And the third transverse fold, which is inconstant, lies 2.5 cm below the third fold and projects from the left wall. Now look at this diagram. For example, this is showing different folds. The first fold, the second fold, which is the largest of all, and then there is the third fold. So this is, for example, the right side, this is the left side. Okay, so the first one is from the left side, then the second one is from the right side, and the third one is from the left side as well. This is the most constant, and that's the transvection view of these folds. These transverse or horizontal folds are more permanent as compared to the longitudinal folds. Okay,
Okay, and then functional parts of rectum. The rectum has two developmental parts, which means embryologically it has been derived from two different parts. The upper part related to peritoneum, जो upper part था जिसके front पे भी peritoneum थी, ये diagram याद है ना, front पे भी peritoneum थी और side पे भी peritoneum थी. So जो upper part है which has the peritoneum actually develops from the hindgut and lies above the third transverse fold of the rectum. The lower part, which is devoid of peritoneum, develops from the cloaca and lies below the third transverse fold. So ये जो third transverse fold है ना, it's an important embryological landmark. इसके ऊपर की जितनी जितनी स्टोरी है वो hindgut derivative है, इसके नीचे की जितनी जितनी स्टोरी है ये cloaca derivative है. Okay? Functionally, the sigmoid colon is a fecal reservoir. And whole of the rectum is empty in normal individuals, being sensitive to distension. यानी rectum खाली होता है, जैसे ही उसमें fecal material enter होता है वो distend होता है and there is a desire to defecate. बाज़ लोगों का सिस्टम बड़ा परफेक्ट काम कर रहा होता है, सुबह जैसे ही आंखें खुलती हैं sigmoid colon से feces move करता है rectum में and they have a desire to defecate and they rush to the washroom. Now we also, this is very important, arterial supply. Arterial supply of rectum is via obviously multiple sources, the first one of which is superior rectal artery. This is the main artery of the rectum and it is the continuation of the inferior mesenteric artery at the pelvic brim. Remember the inferior mesenteric which supplies the hindgut, so this is continuous as the superior rectal artery and also supplies the rectum. It lies in the medial limb of the pelvic mesocolon and divides opposite the third sacral vertebrae into right and left branches which run on each side of the rectum. Each branch breaks up at the middle of the rectum into several small branches which pierce the muscular cords and run in the anal columns up to the anal valves where they form looped anastomosis. So if we look at this diagram which is showing you the superior rectal artery which is continuation, ऊपर इसके क्या होगी, inferior mesenteric, not superior, sorry, inferior mesenteric artery की continuation है this superior rectal, और ये superior rectal कई सारी branches में divide होती है and come up till the anal valves. It goes down up till anus. Okay, right. Okay, the second arterial supply is via the middle rectal arteries. These supply only the superficial course of the lower rectum. दे अराइज यानी अपर रेक्टम में ये सप्लाई नहीं करता. मेन आर्टरी कौन सी थी, मेन आर्टरी का नाम था सुपीरियर रेक्टल आर्टरी. ओके, लोअर पार्ट को ये सप्लाई कर रही है, वो भी सिर्फ सुपरफिशियल लेयर्स को, मिडल रेक्टल आर्टरीज. दे अराइज फ्रॉम द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल आइलियक सिस्टम से ये निकली है. ठीक है, देयर एनास्टोमोसिस विद एडजेसेंट आर्टरीज इज पुअर. The third one is median sacral artery. This is a small branch arising from the back of the aorta near its lower end. जहाँ पे aorta divide करता है वहाँ से ये निकलती है. It descends in the median plane and supplies the posterior wall of the anorectal junction. So आप देख रहे हैं कि जो middle rectal artery है और जो median sacral artery है, इनकी limited supply है, limited contribution है यहाँ पर, very limited contribution, but the main contribution is via the superior rectal artery. Okay, now the venous drainage. जैसे सुपीरियर रेक्टल आर्टरी थी, देयर सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, बिल्कुल इसी तरह देयर इज अ सुपीरियर रेक्टल वेन. द ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस वेन बिगिन इन द एनल कैनाल from the internal rectal venous plexus in the form of about 3 veins of considerable size. They pass upward in the rectal submucosa, pierce the muscular cord about 7.5 centimeters above the anus and unite to form the superior rectal vein, which continues upward as the inferior mesenteric vein. So, and it ends actually in the splenic vein. So, if you look at this diagram here, so this is the site of anal anastomosis. यहाँ से 3 veins निकल रही हैं. These 3 veins, they merge to form this big vein, which is the superior rectal vein, and this superior rectal vein goes up and continues as inferior mesenteric vein, which goes in the splenic vein, which goes in the portal vein and leads to portocaval anastomosis. So that should be very, very clear. That's pretty straightforward. Then there is middle rectal vein. The tributaries of this vein drain chiefly the muscular walls of the rectal ampulla. So जैसे middle rectal artery थी, superficial layers of lower part को supply कर रही थी, similar venous drainage है. बिल्कुल ऐसे ही median sacral drain करती है into common iliacs. अब बात करते हैं lymphatic drainage की. So ये arterial system
तीन आर्टरीज हैं, ये समझ में आ जानी चाहिए आपको, एंड देन तीन वेन्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द lymphatic drainage. Lymphatics from more than the upper half of the rectum passes along the superior rectal vessels to inferior mesenteric node. So that's the group of lymph nodes जहाँ पे upper part का lymph drain हो रहा है after passing through the pararectal and sigmoid nodes. And then lymphatics from the lower half of the rectum passes along the middle rectal vessels to the internal iliac lymph nodes. So two group of lymph nodes, inferior mesenteric lymph nodes and internal iliac lymph nodes, receiving lymphatic drainage from the upper part of the rectum and lower part of the rectum respectively. So that's the diagram to show you that this is the rectum, the lower part is going, this is rectum, so the lower part and the upper part into different group of lymph nodes. You see there the inferior mesenteric lymph nodes getting lymph from the upper part. Okay, so that is an important lymphatic drainage. So inferior mesenteric lymph nodes and internal iliac lymph nodes. Okay, so here we have the internal iliac group of lymph nodes. This is internal iliac group of lymph node of the right side. This is of the left side. So they are receiving lymphatic drainage from the lower half of your lower part of rectum, and the upper part of rectum is going to the inferior mesenteric group of lymph node, which is here. Okay, and this is important because colorectal cancer is very common. So because the cancer is common, you should know कि वो cancer drain actually कहाँ करेगा, कौन से group of lymph node में. So this is an important clinical surgically correlated anatomy. So lymph nodes की बात हो गई. Lymphatics from the lower part of the anal canal drain into superficial inguinal. So anal region के बारे में बात करेंगे जब anal region पढ़ रहे होंगे. Okay, now the nerve supply. Rectum is supplied both by sympathetic system L1 and L2 as well as parasympathetic system S2, S3 and 4 through the superior rectal or inferior mesenteric or inferior hypogastric plexus. Now sympathetic nerves, सुनिए ये गौर से important है. Sympathetic nerves are vasoconstrictors, inhibitory to the rectal musculature and motor to the internal sphincter. इस सब का पर्पस है कि फीसिस को होल्ड किया जाए, स्फिंक्टर को क्लोज किया जाए. ठीक है, जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं दे आर मोटर टू द मसल्स, यानी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एंड इनहिबिटरी टू द इंटरनल स्फिंक्टर. तो स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा और फीसिस बाहर निकलेंगे. सो फीसिस जब निकलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेक्टम से, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक ड्राइव. सिम्पैथेटिक ड्राइव इज टू close the rectum. Okay, sensation of distension of the rectum passes through the parasympathetic nerves. क्योंकि मैंने आपको बताया ना पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का काम है फीसिस को बाहर निकालना, तो यही पैरासिम्पैथेटिक ब्रांचेस कैरी करती हैं डिजायर ऑफ डिफिकेशन की सेंसेशन को. ओके, नाउ सपोर्ट ऑफ द रेक्टम. pelvic floor formed by levator ani muscles, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने pelvic diaphragm डिस्कस किया था. Fascia of Valder, it attaches to the lower part of the rectal ampulla to sacrum. So there is pelvic floor which is supporting rectum, there is fascia of Valder which is supporting rectum, and there are several ligaments, lateral ligaments of rectum, rectovesical fascia, the pelvic peritoneum. This is all what we have done. So basically जो support of pelvic diaphragm हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, those are the components supporting the rectum as well. Okay, nothing new in that. Now we have to discuss some clinical important stuff. Digital per rectum examination, that's an extremely important stuff. अगर आप सर्जरी में इंटरेस्टेड हैं, सर्जरी के वार्ड्स कर रहे हैं, तो वहाँ पर रेक्टल एग्जामिनेशन के बगैर पेशेंट्स की एग्जामिनेशन कंप्लीट ही नहीं होती. ऑल्सो इन गायनी यू समटाइम्स हैव टू डू इट. सो दैट इज बेसिकली अ वेरी कॉमनली परफॉर्म्ड examination in which what happens that the finger enters the anal canal before reaching the lower end of the rectum. So basically you insert the finger in the anal canal and it also reaches the lower end of the rectum. In a normal person, the following structures can be palpated by a finger passing per rectum. In males, anteriorly prostrate आप feel कर सकते हैं, seminal vesicles and vas deferens, they all can be palpated by the anterior palpation of the anterior rectal wall या anal wall को जब आप push करते हैं. So all these structures can be actually felt. In females, perineal body can be felt and cervix and presenting part of the fetus if the fetus is coming like in this diagram out of the vagina. Now
In both sexes, you can also feel inorectal ring, coccyx and sacrum, posterior side पर obviously, ischial fossa, initial spines, lateral sides पे. In patients, a PR examination can help in palpating the following abnormalities. Within the lumen, fecal impaction. So you can see if there is a lot of feces stored there in the anal canal. You can feel bleeding piles. I mean, it will be red color on the gloves. You can feel hemorrhoids, which are dilated blood vessels. In the rectal wall, rectal growth can be felt, such as cancer. Outside the rectal wall, all these structures जो यहाँ भी ऊपर बताए हैं, they all can be actually felt. So this is a diagram showing finger going through the anal canal and palpating prostrate in the anterior wall. Okay. Now during parturition, dilation of the cervix, this is the baby coming out. So that's okay. Proctoscopy and sigmoidoscopy. Proctoscopy का मतलब ये होता है कि स्कोप आप डालते हैं और रेक्टम को विजुलाइज करते हैं. सो रेक्टम को देखने का प्रोसेस कहलाता है proctoscopy. एंड sigmoidoscopy एक स्कोप बाकायदा डाला जाता है जिससे sigmoid कॉलम तक जाते हैं. सो दैट इज sigmoidoscopy. इफ यू आर लुकिंग एट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ sigmoid colon, दैट इज sigmoidoscopy. और अगर आप रेक्टम को इंटरनली देख रहे हैं, सो दैट इज proctoscopy. Okay. Now, the interior of the rectum and anal canal can be examined under the direct vision by a special instrument like a proctoscope or a sigmoidoscope. Sigmoidoscope has much more power to be also penetrating into the sigmoid colon. Okay. Now, these are very useful techniques if you are examining a patient for hemorrhoids, which are piles, or any other abnormalities which you are suspecting in rectum or sigmoid colon, such as diverticula or bleeding or any growth in the rectum. Okay. Now, prolapse of rectum is a term which means कि rectum पूरा prolapse हो गया है, निकल गया है, anal canal से निकल भी सकता है अगर वो complete prolapse है, otherwise वो अपनी जगह छोड़ देता है. Okay. So incomplete or mucosal prolapse of the rectum through the anus may occur following violent straining. बहुत जोर लगा लिया defecation में या parturition में, so it can actually come out. So that is called prolapse. Okay. Complete prolapse, which is also called procedentia, is a condition in which the whole thickness of the rectal wall protrudes out through the anus. पूरे का पूरा rectum anus से बाहर आ गया. The contributory factors in its causation are the abnormalities in the pelvic floor, excessively deep rectovesical or rectouterine pouch, inadequate fixation of rectum in the presacral bed. So this is basically a embryological problem जिसमें पूरे का पूरा rectum बाहर निकल आता है. Okay, surgically इसको फिर हम fit करते हैं. Neurological disturbances of rectum. In spite of the identical innervation of the rectum and bladder, the rectal involvement in the nervous lesion is less severe than that of the bladder. So patients usually urinary incontinence में ज़्यादा जाते हैं as compared to fecal incontinence. ठीक है? After sacral denervation of the rectum, the peripheral nervous plexus controls the autonomic evacuation of the rectum. This reflex activity is more massive and complete when sacral. So basically यही point है कि जो fecal incontinence है, it is less common than urinary incontinence. Now this is the super heading, carcinoma of the rectum. Pathology में इसका पूरा detail पढ़ेंगे, but here this is very common. It's a common problem. So cancers in rectum is not uncommon. Okay, और young patients में ज़्यादा से ज़्यादा सामने आ रहा है, and is generally situated at the rectosigmoid junction. This is the site, common site for this cancer. Or I mean, there are so many causes, including diet, genetic factors, and different environmental factors, and it is lethal. So it spreads very very quickly. हम पढ़ेंगे pathology में इसके बारे में. Now, rectal incontinence depends solely on the anorectal ring. If the anorectal ring is damaged, then it has to be surgically fixed. Okay, so that's all about rectum. Very important anatomy topic. You should know the structure, the curves, the relationships, arterial supply, venous drainage, and lymphatic drainage. Okay, यहाँ रोकते हैं इस वीडियो को. अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी and we will discuss इस चैप्टर का बाकी का पार्ट which is the anal canal. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. Take care of yourself.